There are many places like London, Paris, Rome and Amsterdam where lakhs of people from India visit every year. And one among them is Kishore. Tired of his hectic schedule of meetings in office for hours every day, he is thinking of going to Europe for a holiday in July with his family. June to September is the best time to visit Europe. Kishore calls up tour operator Verma to inquire about the Europe trip in July for 3 people. Verma tells him that this time it'll be very expensive. When Kishore questions why, Verma tells him to ask this question to the government and the finance minister instead. He tells Kishore that it was announced in the budget to increase the tax on tour packages. Kishore is left surprised and wonders why. Are you too bored of your everyday routine and plan to go on a family trip abroad like Kishore? If yes, then be careful, as it can be heavy on your pocket. Because traveling abroad is going to be expensive. The reason for this is the announcement made in the budget 2023. Not only this, if you invest abroad, even then, more pockets will have to be loosened. But first, let's talk about how expensive traveling abroad will be. The government has amended Section 206C of the Income Tax Act to levy higher tax on foreign tour packages. Under this, TCS will be levied at the rate of 20%. If you book foreign tour packages now, then you have to pay 5% tax as TCS. But from the 1st of July, it will increase to 20%. For example, if you spend 4 lakh rupees to buy a foreign tour package, then you have to pay a TCS of 20,000 rupees at the rate of 5%. Whereas from the 1st of July 2023, you'll have to spend 80,000 rupees for this, which means now you have to pay 60,000 rupees more while buying the package. कि TCS कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये आपका पैसा है जो सरकार अपने पास रोक लेती है, जिसको विथहोल्ड कर लेती है, और ये आपको बाद में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वापस मिल जाता है। तो पहली तो बात ये कि सरकार इसमें जो घरेलू हमारा जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना चाहती है कि आप लोकल टूरिज्म ज्यादा कीजिए इंस्टेड ऑफ फॉरेन टूर्स की बजाय। दूसरी जो सरकार के पास ऐसा डाटा अवेलेबल है कि ट्रैवल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न्स फाइल नहीं किए जाते। लोग इस फॉरेन टूर्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो सरकार को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो सरकार अपना 20% टैक्स लेकर के रख लेगी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार का 20% होता है, जो उसका रिकवर हो जाता है। हाईएस्ट टीडीएस का जो रेट है, तो अपने आप आपको वापस लेना है तो आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो उससे रिटर्न फाइलर जो है वो बढ़ जाएंगे और सरकार को जो है टैक्स मिलेगा। ऐसी एक जरूरतें हैं। जो भी आपका पैसा सरकार टीडीएस की शेप में या टीसीएस की शेप में आपसे लेती है, वो सरकार आपके अकाउंट में उसको जमा कर देती है, आपके टैक्स में वो पैसा जमा हो जाता है। जब कभी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं साल के बाद, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो टैक्स आपका वहां पे पहले से जमा किया हुआ पड़ा रहता है। आप अपनी आयकर की रिटर्न भरते हैं, उसके अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और ये जो टैक्स आपने दिया हुआ है इसका कम या ज्यादा का वहां पर आप हिसाब लगाते हैं, और अगर आपका पैसा ज्यादा है तो सरकार आपका पैसा वापस कर देती है, ये रिफंडेबल है। और अगर आपका ऐसा लगता है कि आपकी इनकम ज्यादा है और आपका टैक्स और बनता है, तो आपको और टैक्स जमा करना पड़ता है। Well, that's all about spending. Now let's come to investment. If you buy property or shares abroad or send money to a relative, then you will have to pay more tax. The government has proposed in the General Budget 2023-24 that under the liberalized remittance scheme LRS, more tax will be charged on sending money outside the country. Now let's talk about how much will it cost to invest abroad. In the budget, TCS has also been proposed to be increased from 5% to 20% on sending money outside the country under the LRS, and to remove the limit of 7 lakh rupees. This means that from July 1, tax will be deducted at the rate of 20% on every penny sent out of the country. However, money sent abroad for treatment and education was kept out of this purview. For example, if a person sends $2 lakh abroad to buy an asset or a share or to his relative under LRS, then 20% of the amount, that is $40,000, will be withheld by the bank.
it will be deposited in the government account in your name. The remaining $1,60,000 will be sent abroad. Under the liberalized remittance scheme LRS, any Indian can send up to $2.5 lakh abroad every year. To send more than this, the Reserve Bank's approval is required. About 5% of tax would be charged for education and medical treatment. It is proposed to continue the tax at the rate of 5% on the amount above 7 lakh rupees sent abroad for medical treatment and education. Similarly, money or amount sent by taking an education loan from a financial institution to study abroad is more than 7 lakh rupees, then 0.5% TCS will be imposed on it. अब सवाल आता है, आपने इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट किया और वहां आपको प्रॉफिट हुआ, तो वहां पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको यहां इंडिया में टैक्स देना जरूरी है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप अपनी आयकर की रिटर्न भरें तो उस पर जो प्रॉफिट आपको हुआ है, अगर आपने कोई ऐसा निवेश किया था वहां पर, तो उस प्रॉफिट को यहां की आय के अंदर जोड़ना आवश्यक है। ग्लोबल इनकम पर आपको टैक्स देना होता है। यह अलग बात है कि अगर वहां आपने कोई टैक्स पे किया हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो सरकार ने आपका पैसा विथहोल्ड किया हुआ है भेजते वक्त, वो पैसा भी आपका जो टैक्स है वो अब आप इस वक्त यहां एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपने पैसा फॉरेन में कमाया है, पूरी दुनिया में कहीं भी कमाया, भले ही वो एलआरएस से गया हो या कैसे भी गया हो, अगर आपके नाम से है तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। Like Kishore, you must have also understood that from July 1, you'll have to spend more while traveling abroad or investing in another country. However, while filing income tax returns, you can get refund by giving details. The second biggest impact of this decision will be on the businesses of domestic tour operators. If you're sending money for the education of your child, then education link is a must, so that only 5% TCS is deducted. Otherwise, TCS will be deducted at the rate of 20%.